ओके सो वेलकम टू आवर कप क्योर पॉडकास्ट। आज हम लोग आपको एक स्पेशल गेस्ट लाए हैं हमारे पॉडकास्ट पे, जो बेसिकली फिजियोथेरेपी के वर्ल्ड में एक गेम चेंजर है और ही डजंट जस्ट गो बाय द बुक्स, ही एक्चुअली आल्सो करेक्ट्स द बुक आल्सो। और ये फिजियोथेरेपी के बहुत सारे स्टूडेंट्स के टीचर हैं, हमारे भी टीचर हैं, हमने भी इनसे सीखा हुआ है। तो वी वेलकम you all, Dr. Swapnil. Dr. Swapnil. Thank you, Nazir, for having me here. So, Dr. Swapnil is basically a leading physiotherapist. He practice in Mumbai, but क्या प्रैक्टिस करते हैं वो? कपिंग थेरेपी प्रैक्टिस करते हैं, IASTM प्रैक्टिस करते हैं, ड्राई नीडलिंग प्रैक्टिस करते हैं, MFR प्रैक्टिस भी करते हैं, वो बच्चों को सिखाते भी हैं। एंड ही इज समवन हु इज सो पावरफुल इन टर्म्स ऑफ टीचिंग एंड गेटिंग अपडेटेड नॉलेज, बिकॉज ही goes across the cities, सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी जाते हैं, UK, US, साउथ अफ्रीका, दुबई, यहाँ पर वो बच्चों को सिखा भी चुके हैं। तो इनके पास जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, बिकॉज वो सिर्फ इंडिया में नहीं पढ़ा रहे, वो बाहर के स्टूडेंट से भी मिल रहे हैं, बाहर के फिजियोथेरेपिस्ट से भी मिल रहे हैं, और ये बिलीव करते हैं कि एथिकल टीचिंग के अंदर, एथिकल प्रैक्टिस के अंदर जो चीज़ें हमारे सोसाइटी में, हमारे इंडिया के अंदर जो एजुकेशन का जो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, वो एक तरीके से ठीक करने के लिए थोड़ी इनकी कोशिश रहती है। सो सर, हाउ डिड इट स्टार्टेड फिजियोथेरेपी? ये पूरा आपका मतलब ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी? So career मेरा start हुआ, I did my undergraduation from Nair Hospital. Then I went to do my post graduation from London Stratford University. There we actually जो teachers थे वो काफ़ी अच्छे मिले थे। So हमारा जो प्रोग्राम था वो actually sponsored प्रोग्राम था IOC के through. Okay. That stands for International Olympic Committee. And we have totally 4 modules basically related to musculoskeletal and sports. तो स्पोर्ट्स के जो हमारे टीचर्स थे वो टीचर्स थे जहाँ जिन्होंने लाइक प्रॉपर बुक्स लिखी हुई है ऑन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स इंजरीज मैनेजमेंट एंड फर्स्ट एड के हिसाब से। तो गाइडेंस जो मेरे को मिला वो टॉप ऑफ द इंडस्ट्रीज से मिला था। सो हमारी जो पोस्टिंग थी वो यूके के 4 सिटीज़ में पोस्टिंग लगाई थी by IOC, International Olympic Committee, and there I actually learned all the major basics of all the technique which I'm teaching right now. Okay. So the core basics of whatever I teach has actually come from them who has actually been excelled in this particular field, and those who are like well educated, well researched, they are publishers and they have done a lot of research for approximately 35 years they have put into this practice. So the techniques which we teach through HPE is all basically the techniques coming from UK. Okay. And that's the reason why the accreditation and everything which we give is basically from them. So that's how it started. Work wise, I was very lucky to get into Indian shooting team back then when I was studying in London, and I was a part of Indian shooting contingent for 2012. And the good thing about my work was I was actually a personal physio for Gagan Naran. Okay. And he was the one who actually opened a medal tally for India back then in 2012. So like he is God gifted, but that was India's first medal in 2012. और उसके तुरंत बाद like after 3 or 4 days, like Vijay Kumar, he is into a rapid pistol shooter, he won the silver medal. So the 2 athletes which I was actually working with both individually got medals for India. So that actually was like really the best moments in my entire life, and that has created like a major boom for the physios over here, because at that time there was no Instagram. Correct. There was only Facebook. So that Facebook post and Facebook coverage over the Olympics and the newspaper articles which was published later on actually made people realize the importance of physical therapy in sports. And that's how the career also the entire physical therapy education career and the profession got lifted at some point through that particular
Olympic standards. After that, from 2012 to 2014, people have started realizing the importance of physical therapy, and they started recruiting the physiotherapists. So there was like the organizations like Olympic Gold Quest, they were at major hunting of having physiotherapists on board for the athletes. So until unless you don't win anything for India, the nation doesn't gets crazy about it. Correct. Like hockey being our national sports, but it was until 1983 when India won the World Cup for cricket, that's how the craze entirely shifted from hockey to cricket. Same way, when they realized the potential of physical therapy or support of physiotherapists to a sports, that's when the boom came. And then I remember in 2008 to 2012 there were hardly any sports physiotherapy, neither a college also. But after 2012 to 2017, a college started giving post-graduation education in sports, and that only happened because of that Olympics. Even shooting as a sports has always been kind of हमेशा medals shooting से आया. तो जैसे गगन ने जीता, विजय कुमार ने जीता, और बाद में भी काफ़ी contingents ने जीता है in the Olympics. So this has kind of got shooting also is loyal. So not just physical therapy, sports massage courses, cupping was introduced in Olympics in 2016. Yes. So majority of the techniques which actually got boomed is because of the athlete showing them, and then general public's notions changes that if an athlete is taking that therapy and can do wonders for their country, so that's how people started accepting the facts. Correct. I think cupping also, जब cupping Michael Phelps ने जब Exactly. cupping के कुछ marks उनके ऊपर आए थे, तो इनको highlighted कि ये क्या marks हैं, Exactly. curiosity से लोगों ने समझा कि यही cupping therapy है. Correct. तो जब तक वो देखते नहीं हैं लोग, तब तक उसको आजमाते नहीं हैं. तो वैसे वाला ये सिचुएशन है. तो otherwise कि cupping therapy has been there since so many years. तो popular हुआ because of Michael Phelps. Yeah. And that too वो cupping physio ने नहीं लगाया था. That cupping was actually put by a sports massage guy. Okay. Yeah. But because physical therapists are more, like more sound technically with their anatomy as well as physiology, so we kind of adapted cupping and then made it approach in such a way that it can be used for physical therapy approach and not like a traditional cupping format. So जब आप schools में थे, you were like कि आपको डॉक्टर ही बनना है, या somebody has pushed you into this field? To be really very honest, I always wanted to become a doctor, like MBBS, but because getting into government college is always a difficult task, okay? Then you have to be at the topmost. So I repeated the CET to get it to the top, but unfortunately I end up having the MBBS first, selection of the colleges for dental, and then came the physical therapy. So वो physical therapy के options में मुझे जो government college मिला था वो था Nair. And we were only 10 of us, and the number of patients which we have seen over there is like humongous. So 10 patients versus almost daily case 100 patients. So that's how the hands-on skills improved. 10 physios. 10 physios. And 100 patients. And they only take like 10 seats. The seats has not increased over a decade. अभी भी आप बोलोगे सिर्फ 10 सीट ही है. Yeah. So that's also Nair, Sion and KM. No, KM has 30. But Sion and Nair has only 10 seats. आज भी आप बोलो, आज भी 2025 में भी सिर्फ वो 10 seats, and that is good. They should not increase, because that's how the good doctors always comes from the government colleges and not from the private. Agreed. उस टाइम पे नीट हुआ करता था? CET थी. CET. तो CET के बेस पे आप लोगों को एडमिशन. Yeah. Correct. So मैंने एक होलिस्टिक हीलिंग की एक बुक पढ़ी थी सर. So उसमें जो टेक्निक्स मतलब जो बताई गई थी वो ये था कि जब कोई पहले बीमार होता ना, तो वो पहले एक्चुअली उस जमाने के जो फिजियोथेरेपिस्ट होते थे, जो फिजियोथेरेपिस्ट के जैसे काम करते थे, पहले वो उनके पास भेजते थे. और वहाँ पे अगर वो ठीक नहीं हो रहे तो फिर उनको डाइट में कुछ चेंजेस कराते थे, और डाइट से भी अगर नहीं चेंज हो रहा है तो फिर उनको मेडिसिन पे लेकर आते थे.
अभी हम जो जनरेशन में चल रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि हम मेडिसिन पहले खा लेते हैं एंड देन प्रॉब्ली वी गो एंड चेंज आवर डाइट एंड देन वी गो टू लास्ट, हमारा एक ऑप्शन होता है फिजियोथेरेपी के पास जाना। तो मेरा एक्चुअली सवाल ये था कि फिजियोथेरेपी को लोग ना बहुत ज़्यादा ऐसे इंजरी रिकवरी और इस सब के लिए थे, इसको हम लोग क्यों ना प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरह क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स सर? सी अवेयरनेस नहीं है, तो अनटिल अनलेस आपको जब चोट लगती है तभी आप डॉक्टर के पास जाते हो। करेक्ट। अनटिल अनलेस आप बीमार पड़ते हो एंड घर पे पैरासिटामोल ले लिया और ठीक हो गया, तब तक वो लिमिटेशन है। हाँ, अगर पैरासिटामोल लिया और ठीक नहीं हुआ तभी इंडियन पब्लिक में ऐसा नोशन है कि नहीं अभी जाना चाहिए डॉक्टर के पास। सही। सो प्रिवेंशन के लिए लोग आते हैं, बट इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक दिल्ली, बॉम्बे, और वो भी बॉम्बे में पूरे जगह पे नहीं, कुछ कुछ जगह है जैसे जुहू हुआ, बांद्रा हुआ या साउथ बॉम्बे, जहाँ पे लोग अवेयर है फिजियोथेरेपी को लेके, वहाँ पे प्रिवेंशन होता है। अदरवाइज इफ़ यू गो मोर टूवर्ड्स थाने साइड, वहाँ पे एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन है नहीं, सो बेसिक नॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी भी काफ़ी पुअर है। तो प्रिवेंशन के लिए लाना अपना सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी उतना अच्छा होना चाहिए। सो थोड़ा सा लैकिंग है बिकॉज वी आर डेवलपिंग कंट्री, यू कांट एक्सपेक्ट एवरीवन टू टेक फिजियोथेरेपी बिकॉज इट्स नॉट चीप, इट्स एक्सपेंसिव। सो बेसिक थेरेपीज लाइक मसाजेस या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन लोग ट्राई करते हैं, बट प्रिवेंशन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बट अभी फिलहाल तो है नहीं। या